नमस्कार मैं आपन को स्वागत करुछि अड्डा 24/7 ओपीएससी चैनल रे। सॉरी फॉर द लेट प्रणाम स्वागतिका। तो इकोनॉमिक्स रो अनदर 50 सेट ऑफ क्वेश्चंस हमें डिस्कस करूछु। ठीक अच्छे जो मैंने ऑनलाइन अच्छा से को मु कहबी जो आप चाहते शेयर करने क्लासेस टी शेयर कर दिंतु सो दैट इट कैन रीच टू द मैक्सिमम स्टूडेंट्स। ठीक अच्छे चलते स्टार्ट करवा डिस्कशन। इकोनॉमी 50 सेट ऑफ क्वेश्चंस हमें देखिबा। आज कोटेशन He who conquers himself is the mightiest warrior. Conquers himself, जय जगन्नाथ लकी। Conquers himself in the sense आपण निज ऊपर जदि कंट्रोल करी जानी चंदी, निज ऊपर विजय लाभ जदि आपण करी परिबे, then you would be considered as mightiest warrior। सबुठु बड़ योद्धा हिसाब रे आपण को परिगणित करा जिवो। तेनु निज को कंट्रोल करवा इस सबुठु अधिका सपोज निजर जो जमती इमोशंस गुड़िक अच्छी से राग हो द्वेष हो ये सब जिनस को किभली भाव में कंट्रोल करें ता उपरे जदि आपनकर कंट्रोल रहिला डेफिनेटली यू आर द माइटेस्ट वॉरियर। एनीवे ये हूँ मोर टेलीग्राम चैनल आपण कनेक्ट करि परिबे। ये हूँ मोर इंस्टा चैनल आपण कनेक्ट करि परिबे। मटेरियल ठू आरंभ करिकी कंफ्यूज मतलब डाउट ये सब जिनस गुड़िक मोर टेलीग्राम रे मु पोस्ट करे। निश्चय स्वागतिका। यू नीड टू बी आउट फ्रॉम दैट कंफर्ट जोन फॉर एनी काइंड ऑफ जहाँ भी आपनकर गोल अच्छी ऑब्जेक्टिव अच्छी आपण कंफर्ट जोन रू बाहर ले ही ताको क्लियर करि परिबे। इकोनॉमिक्स डिस्कस करिबा 50 सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 1.5 an hour। चलंतु स्टार्ट करिबा। देखो 11 AM रे हमें जीके एवं इकोनॉमिक्स ओडिशा जीके पर्टिकुलरली नै कि आसुचु एवं कोड मोर होची यूज 962 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। यदि आपण अड्डार कोनोसी भी कोर्स किनिबा पई परचेस करिबा पई चाहउछथि पर्टिकुलरली OCS रो वॉरियर बैच आपण कोड यूज करि परिबे Y962। So let's begin the discussion. Prathama question, the first question on the screen. Consider the following statements. Selling of government bond in the open market by the RBI increases the money supply. In outright open market operations, the central bank buys the government securities without any promise to sell them later. ठीक अछि तबे देखिबा ये पर्टिकुलर यार क्वेश्चन रो आंसर कोन हबो। इजी क्वेश्चन ऑलरेडी हमें डिस्कस करिचे मल्टीपल टाइम्स। जदि आपण आंसर करि परिबे इट्स वेल एंड गुड। आंसर जदि आपण करि परिबे कौन आंसर हो वन ओनली। ओके देखिबा सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड इन द ओपन मार्केट बाय आरबीआई इंक्रीजेस द मनी सप्लाई। सो ये कौन पचारुची करेक्ट पचारुची सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड की सेल करूची आरबीआई काहाकू सेल करूची पब्लिक ये जो माने इन्वेस्टर अछन द आरबीआई सेलिंग द गवर्नमेंट बॉन्ड दैट मींस आरबीआई इज रिसीविंग मनी। आरबीआई इज रिसीविंग मनी तो आरबीआई मनी रिसीव करूची माने कोन कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी और रिड्यूसिंग मनी सप्लाई बुझियो जी जिनसटा
मिस्टेक हवा कथा नुहे मल्टीपल टाइम्स हम डिस्कस करिजे एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपांशनरी माने टू इंक्रीज मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्शनरी माने टू डिक्रीज मनी सप्लाई इठी कोन पचोरची से कुछ मनी सप्लाई इंक्रीज होची इंक्रीजेस द मनी सप्लाई दैट मींस इट इज सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड या बाइंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन कोन ओपन मार्केट ऑपरेशन होची या ओपन मार्केट होची जोटा कि हम क्वांटिटेटिव टूल टू कंट्रोल मनी सप्लाई क्वांटिटेटिव टूल्स हमने जानिथिबे मनी सप्लाई गोटे अछि क्वांटिटेटिव टूल्स आ गोटे अछि क्वालिटेटिव टूल्स एटा होची कोन क्वांटिटेटिव ओपन मार्केट ऑपरेशन सो सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड मींस से कोची RBI increases the money supply it's not increases money supply RBI will receive money that means contractionary reducing money supply so first statement is incorrect कारण से हमको पचारची कोन करेक्ट फाइंड आउट करबा पे सेकंड देखंतु in outright open market operation the central bank buys government securities without any promise to sell them later तो जो open market operation रे particularly जेतोले RBI तार कोन करे purchase करे या buys the government securities without any promise to sell them later सेठी कोनसी प्रकार रो promise रखे नाही कि ताको परे से कोन करिवो बिकिवो कारण ए जिनस आपण रेपो रिवर्स रेपो रे देखिबे सेटमेंट ताको कोआ जाय रीपर्चेज ऑप्शन रेपो रेट रीपर्चेज रिवर्स रीपर्चेज काहे कि ना जदि सेल करूची तबे बाइंग रो गोटे एग्रीमेंट करे कि आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वी विल बाय इट बट ए जगह रे ओपन मार्केट ऑपरेशन रे बाइज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विदाउट एनी प्रॉमिस टू सेल देम लेटर राइट तेनु आंसर होची आपनकर बी 2 ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट ठीक अछि किछ डाउट जदि थिबो डेफिनेटली यू कैन आस्क नेक्स्ट consider the following statements about payment banks consider the following statements about payment banks provide basic banking services of acceptance of deposits lending including issuance of credit cards multiple times हमें discuss करिचे यार आंसर आपण माने करंतु as per RBI guidelines payment banks cannot advance loans which of the statement given above is are correct दुईटी जाक स्टेटमेंट जदि आपण देखिबे both the statements are contradicting to each other जदि RBI गाइडलाइन अछि एटा यदि ठीक अछि ये भूल रहइबो एवं एमिति भी आमे जानिचे कोन ना जदि आपण देखिबे RBI रो गाइडलाइंस कोन पेमेंट बैंक्स लोन देई परिबो नाही क्रेडिट कार्ड देई परिबो नाही तो इजीली आपण कोन आंसर करि परिबे इजीली आपण कोन आंसर करि परिबे सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट कारण से करेक्ट पचरछि अपन को RBI गाइडलाइंस कोन मेंशन अछि कि पेमेंट बैंक्स कैन नॉट एडवांस लोन्स सेति पय से माने क्रेडिट कार्ड भी इशू करि परिबे नाही तनु सेकंड स्टेटमेंट अछि करेक्ट फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट आंसर होछि अगेन कोन ना B2 ओनली पेमेंट बैंक लोन देई परिबो नाही पुन थरे म कहूछि फर्स्ट डाउट अछि देखिबा पेमेंट बैंक्स प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज करेक्ट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग इंक्लूडिंग इंश्योरेंस ऑफ क्रेडिट कार्ड लेंडिंग माने कोन लोन दवा एंड पेमेंट बैंक्स कैन नॉट गिव लोन सेति पय पेमेंट बैंक्स कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड एज वेल पेमेंट बैंक्स कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड एज वेल तो ऑब्वियसली आंसर कोन फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट केवल एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स करि परिबो RBI रो गाइडलाइंस अनुसार सेकंड स्टेटमेंट कोन कैन नॉट एडवांस लोन्स ऑब्वियसली ठीक अछि तो B2 only is the correct answer next with reference to bank for international settlements consider the following statements बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपण माने जानिथिबे म आगुरु भी कहि छी आपन को बेसिल नॉर्म्स अछि
ये Basel norms, what is this Basel norms? Basel norms होची to regulate those banks. And this Basel norms particular question आसे, Basel norms is related to what? Basel norms is related to what? Simply answer होची related to banking regulation. बुझी होची? तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो तो, it aims to support central bank in their pursuit of monetary and financial stability. It aims to support central bank. Second कौन? It is the Swiss central bank which acts as the bank for central banks. It is the Swiss central bank which acts as a bank for central bank. देखो तो जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो अच्छी से कुछ it aims to support central banks in their pursuit of monetary and financial stability. कौनसी कंट्री रा सेंट्रल बैंक को सपोर्ट करिबा पई केही नांदी. They are sovereign on their own nature or functioning. Sovereignty, they are independent. तेणु ये जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट अच्छी आपण मन जानिथिबे तळे सबप्राइम क्राइसिस हेतला 2008-10 रे या ता पूर्वरु लेट्स से 97 रे ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हेतला. सी समय रे हमें बैंकिंग को कोभली भाव रे गोटे इम्यून तांको रखिबो क्राइसिस जेमति फर्दर न हुए सेथि पई हमें चेष्टा करथिलु कोन ना बैंक रो जेमति जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट अच्छी अंडर हिज लीडरशिप सबु सेंट्रल बैंक रो कोन हुए मीटिंग बसे सेठी से माने डिसाइड करंती को भली भाव रे हमें कोन करिबा व्हाट वी कॉल बैंक पई किछ गोटे नॉर्म्स डेवलप करिबा जोथि पई कि हमें चेष्टा करिबा कोन ना बैंकिंग जेमति क्राइसिस रे न आसे से जिंस को नै कि देखिबे. ठीक अछि. तो मुझे कहली सब बैंक्स गुड़िक से माने निजर होचन सोवरेन से माने इंडिपेंडेंट से मानक कोनोसी इंटरवेंशन करि परिबे नै. इनफैक्ट आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक से माने भी केबे इंटरवीन करि परिबे नै. हां से माने इंस्ट्रक्शन यानी कि सिंपली एडवाइस करि परिबे से माने सजेशंस देई परिबे. जेंति आईएमएफ कोन करे तार जो एनुअल रिपोर्ट अछि सेठी से सजेशंस दी कि इंडिया को एभली करिबा दरकार बट यू कैन नॉट कंपल्सरली इंटरवीन. ठीक अछि. तो से फर्स्ट स्टेटमेंट देखो कौन कहूँ इट एम्स टू सपोर्ट सेंट्रल बैंक्स इन देयर परस्यूट ऑफ मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. एम्स टू सपोर्ट से जो पचारुची सपोर्ट इन द सेंस कि ठीक अछि जदि केबे से भली किछि प्रॉब्लम हुए से माने एडवाइस देई परंती सजेशन देई परंती बट कोनोसी प्रकार कंट्रोलिंग अथॉरिटी किछि नाही. जदि ये टर्मिनोलॉजी छी एम्स टू सपोर्ट तेबे समहाउ आपण कहि परंती एटा होची करेक्ट. एम्स टू सपोर्ट जेमति आईएमएफ कोन सपोर्ट आपण करूची जेतले बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होची से समय फिर कंडीशनल लोन से माने दउचंती हम देखि जे जेमति न्यू लिबरलाइजेशन पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी समय रे. तो से हिसाब रे आपण देखिबे तबे फर्स्ट स्टेटमेंट होची आपनकर करेक्ट. सेकंड से कोची इट इज द स्विस सेंट्रल बैंक व्हिच एक्ट्स एज द बैंक फॉर सेंट्रल बैंक. स्विस सेंट्रल जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट स्विस सेंट्रल बैंक नो है एटा होची गोटे इंडिपेंडेंट बैंकिंग स्ट्रक्चर आपण कहि परिबे. इंडिपेंडेंट बैंकिंग स्ट्रक्चर या गोटे बॉडी आपण कहि परिबे एंड इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल बैंक्स ऑफ द कंट्री. कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल बैंक्स ऑफ द कंट्री. ठीक अछि. एटी आंसर कोन पचडुची इनकरेक्ट पचडुची. इनकरेक्ट माने अगेन बी आपनकर सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट होची आपनकर करेक्ट. ठीक अछि. सेकंड स्टेटमेंट टी इनकरेक्ट फर्स्ट स्टेटमेंट होची करेक्ट. नेक्स्ट देखिबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. इट इज पचडुची कोन ना करेक्ट पचडुची. एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक को डेवलप किए करथिला. एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक को डेवलप करथिला चाइना. कौन पाई ना आपण जानिथिबे चाइना रो गोटे इनिशिएटिव अछि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एटा को मन रखथिबे. चाइना रो गोटे अछि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव द्वारा कौन करे ना चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करे इन एशियन कंट्रीज. इन एशियन कंट्रीज. ठीक अछि. इंफ्रास्ट्रक्चर करे को
कौन तार मेन थीम कौन ना जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रे आपण जमती देखिथिबे सेतबेले जो ट्रेड रूट जो थिला ट्रेड रूट ए ट्रेड रूट कोड थिला ना गोटे होची मराइन ट्रेड रूट थिला समुद्र मराइन ट्रेड रूट आ गोटे होची आपनकर जो सेंट्रल एशिया देखि लैंड रूट जोटा को फेमसली कौन कुआ जाए सिल्क रूट कुआ जाए से सिल्क रूट को पूर्ण थरे रिवैम्प करबा पई चाइना तार डोमिनेंसी या हेजेमोनी को एक्सप्रेस करबा पई से स्टार्ट करिछि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रे चाइना कोन करछि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करछि कनेक्टिविटी जोठी कि ये मेंबर नु है कि इंडिया इज नॉट ए मेंबर of Belt and Road Initiative. Anyway, so the membership of Asian Infrastructure Investment Bank is open to members of the International Bank for Reconstruction and Development. यानी कि जो IBRD अच्छी वर्ल्ड बैंक रो जो मेंबर्स गुडी को अछंदी से माने यार मेंबर ही परिबे. They are open to members of the International Bank for Reconstruction and Development. Second, but not the members of the Asian Development Bank. Asian Development Bank ro members ही परिबे नहीं. China, US and India are the three largest shareholders of Asian Infrastructure Investment Bank. देखो बेटी गोटे जिनस मु आपन कहबी चाइना मुझे एमती कहली चाइना रा एटा होची पेटेंट यानी कि चाइना has developed this. जदि चाइना एटा को डेवलप करिछि तबे यूएस एटी लार्जेस्ट शेयर होल्डर ही परिबो कि ऑब्वियसली यूएस केबे भी हबो नाही कारण चाइना को डेफिनेटली से काउंटर करछि एवं एआईआईबी रो मेन ऑब्जेक्टिव कोन ऑब्जेक्टिव होछि एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट को आपण इनकरेक्ट करि परिबे बाय यूजिंग द लॉजिक. फर्स्ट को देखंतु मुझे एमती कहली चाइना रो एठी कोन अछि चाइना द्वारा ही एटा स्पॉन्सर्ड चाइना ही डेवलप करिछि तेनु सेठी कोनोसी प्रकार मेंबरशिप ड्राइव करा जाउ नाही. न्यू डेवलपमेंट बैंक जो अच्छी ब्रिक्स रो सेठी आपण देखिबे शेयर गुडी को अच्छी इंडिया रे किछि शेयर अच्छी चाइना रे अच्छी रशिया रे अच्छी एमानकर अच्छी बट एआईबी रे कोनोसी प्रकार मेंबरशिप ड्राइव नहीं एटा प्योरली दैट हैज बीन लाइक सेट अप बाय द चाइना प्योरली बाय द चाइना. तेनु in that sense first statement incorrect second statement भी incorrect आंसर होची आपनकर neither one nor two. ठीक अछि. एआईबी रो हेडक्वार्टर म ऑलरेडी आगुरु आउथरे वीडियो रे भी कहिछि एआईबी रो हेडक्वार्टर कोठी अछि प्लीज आंसर करिवे. न्यू डेवलपमेंट बैंक रो हेडक्वार्टर एआईबी रो हेडक्वार्टर कोठी अछि आंसर करिवे आपण. नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. फर्स्ट देखंतु सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, promote high employment, reduce poverty around the world. आंसर कौन हबो आईएमएफ रो मूल लक्ष्य कौन लक्ष्य ऑब्वियसली तीनटा जाको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें जानिछु. सेकंड होची प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड. दिस इज अनदर ऑब्जेक्टिव. ठीक अछि. सांघाई करेक्ट. न्यू डेवलपमेंट बैंक रो हेडक्वार्टर कहिबे कोठी तो यार आंसर होची ऑब्वियसली डी. थ्री कोनोसी बेसी डिफिकल्टी नाही. नेक्स्ट देखिबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू आरबीआई. द आरबीआई रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी. आरबीआई रेगुलेट्स फ्लो ऑफ मनी यानी कि मनी सप्लाई को से कौन करे कंट्रोल करे रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ मनी. सो आंसर इज ऑफ कोर्स फर्स्ट स्टेटमेंट होची करेक्ट अछि. फर्स्ट स्टेटमेंट कौन अछि करेक्ट अछि. इट ब्रिंग्स आउट द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट. ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को किए पब्लिश करे आंसर करि परिबे किए ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को पब्लिश किए करे ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को पब्लिश करे आपनकर एटा चेक करि नंतु आईएमएफ करे कि नाही. सेक्शन 7 of the RBI Act states that central government may from time to time give such directions to the bank as it may consider necessary in the public interest. Of course, RBI Act जो अपन को अछि 1934 तार मेन पर्पस कोन रेगुलेट करिवा. ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आईएमएफ ना वर्ल्ड बैंक एटा देखि नियंतो आपण क्रॉस चेक करिके आंसर करन.
ना एटा चेक करंतु जणे वर्ल्ड बैंक कहउचंती जणे आईएमएफ कहउचंती गूगल करके देखि कोन इट मे necessary consider necessary the public interest of course third statement जो अछि section 7 of the RBI Act 1934 तार काम होची आरबीआई रा काम कोन न कंट्रोल करिवा काहाकू कमर्शियल बैंक्स गुडा को तो आंसर होची आपनकर 1 and 3 C is the correct answer ठीक अछि ग्लोबल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किए आईएमएफ करेक्ट देखो मु कहीं स्टेबिलिटी रिपोर्ट आईएमएफ अपन को कहउतली स्टेबिलिटी एटा को जस्ट अपन जदी तो तार एसेंस को बुझीबे अपन इजीली आंसर करि परिबे स्टेबिलिटी माने कोन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देछि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कोन ना गोटे कंट्री रो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को स्टेबल रखिबा तार कहार काम फाइनेंशियल एस्पेक्ट को स्टेबल रखिबा जेमती आरबीआई कोन करूची फाइनेंशियल एस्पेक्ट को स्टेबल रखिबा पई आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी यूज करूची राइट आपनकर बैलेंस पेमेंट हला फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करूची आरबीआई तनु आईएमएफ रा काम कोन आईएमएफ रा काम होची जदि आपण किछि मॉनेटरी रिलेटेड किछि गोटे मिस्टेक हला किंबा आपनकर बैलेंस पेमेंट रे किछि प्रॉब्लम हला फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रे प्रॉब्लम हला से टाइम रे आईएमएफ स्टेप इन करूची एंड आईएमएफ इज गिविंग लोन एंड अदर थिंग्स सो द मेन आइडिया बिहाइंड द आईएमएफ इज व्हाट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट हला किंबा मॉनेटरी रिलेटेड हला ये सब जिंस को नहीं तेणु से दृष्टि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी माने आपण आईएमएफ को कंसीडर करि पारे वर्ल्ड बैंक रो मेन काम कोन रिकंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सो वर्ल्ड बैंक इज नॉट नेसेसरली डील विथ दिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बट आईएमएफ डज तेणु आईएमएफ आंसर करिवे आपण ग्लोबल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जदि क्वेश्चन आसे बुझी होची जिंसडा नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉन शेड्यूल्ड बैंक नॉन शेड्यूल्ड बैंक रो माने कोन फर्स्ट देखिबा में नॉन शेड्यूल्ड बैंक रो माने कोन हमें देखिबा करेक्ट पचोरची these banks are not included in the second schedule of the RBI Act 1934 they are not eligible to borrow money from the RBI for the normal banking purposes देखंतु scheduled bank and non scheduled bank माने कोन जो गुडी को second schedule of RBI Act 1934 रे अछंती जो गुडी को second schedule of RBI Act 1934 रे अछंती true second schedule RBI Act 1934 रे अछंती से माने होचंदी scheduled bank and those banks are not in the second schedule of RBI Act 1934 they are known as the non scheduled bank जदी गोटे एग्जांपल आपण नेबे non scheduled bank रो से होची जम्मू एंड कश्मीर बैंक एंड non scheduled bank रो जदि आपण देखिबे दे आर नॉट एलिजिबल टू बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई फॉर द नॉर्मल बैंकिंग पर्पसेस फॉर एग्जांपल रेपो रिवर्स रेपो अंडर रे जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटीज अछि बाय द आरबीआई टुवर्ड्स द कमर्शियल बैंक्स दैट कैन नॉट बी डन बाय दीज नॉन शेड्यूल्ड बैंक ठीक अछि तो एठी आंसर होची कोन बोथ 1 and 2 सी इज द करेक्ट आंसर Consider the following factors regarding an industry. Industry se diji, which of these determine the nature and size of the industry? Nature and size of the industry. Capital investment, business turnover, labor force, and power consumption. Capital investment, business turnover, labor force, and power consumption. तो ये को फैक्ट
फैक्टर गुड़िक आपणकर डिसाइड करे कि इंडस्ट्री रो साइज केते रहइबो, नेचर केते रहइबो, यानी कि नेचर माने होची whether it is capital intensive or labor intensive, and size in the sense की micro, small, medium and large. बुझियो जिनसाटा नेचर माने कोन कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव, साइज माने कोन माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज. कैपिटल इंटेंसिव लेबर इंटेंसिव माने कोन, जो माने आगुरु देखिथिबे मु ऑलरेडी डिस्कस करिथिली, जो माने फर्स्ट टाइम देखुचंदी. कैपिटल इंटेंसिव माने जोठी कैपिटल इज यूज्ड हायर देन द लेबर फोर्स. लेट्स से 70% होची कैपिटल एंड 30% होची लेबर, यूजी कैपिटल इंटेंसिव. जोठी सिंपली द रिवर्स, 30% कैपिटल 70% लेबर से होची लेबर इंटेंसिव. ये होची कैपिटल इंटेंसिव, ये होची आपनकर लेबर इंटेंसिव. बुझियो जिनसडा. तो ये होची नेचर ऑफ द इंडस्ट्री. साइज माइक्रो, स्मॉल, मीडियम and large. These are the size of the industry. Now come to the question. Capital investment. If capital investment is the higher or you are investing more in the capital, तो definitely हमें सेटा को कहबा कोन ना capital intensive industry. Business turnover आपण देखिथिबे जो जेतले MSME हमको हमें डिवाइड करूछु, कोटा माइक्रो, कोटा स्मॉल, कोटा मीडियम, कोटा लार्ज, से जगह हमें देखुछु इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट. तो दुईटी जगह आपनकर से नेचर को डिफाइन करिवो. प्लस पावर कंजप्शन रो भी आपण साइज ऑफ द इंडस्ट्री जानी परिबे. तो जो लेबर फोर्स जोटा देछि, लेबर फोर्स पर्टिकुलरली जदि लेबर अधिका आपण यूज करूचंदी, लेबर फोर्स जोटा देछि, लेबर फोर्स ता समहाउ आपण ताको कहि परिबे. देखंतु जदि कहिबी लेबर फोर्स जदि अधिका आपण यूज करूचंती तबे ताको लेबर इंटेंसिव भी कहि परिबा. किंतु जदि क्वेश्चन रा नेचर को देखिबे, नेचर एंड साइज से पचरची लेबर फोर्स, लेबर सबु जगह रे ही आपण यूज करंती. बट हेई पारे आंसर न हेई पारे. मु कहिबेनी कि कंप्लीटली हबो नाही एटा, एवं मु कहिबेनी कि कंप्लीटली हबो, कारण लेबर फोर्स सिंपली लिखा ही जाओ, किछि हेतर लिखा हैनी. तनु जे भी क्वेश्चन जो एग्जाम रे भी क्वेश्चन पचरा जाइथिला तो समहाउ सेटा टिके डाउट रहिबो, जेंति ओपीएस रे हमर डाउट रहउची लेबर फोर्स. कारण जदि कैपिटल इन्वेस्टमेंट रो हमें डिसाइड करि परुचे, हम लेबर इन्वेस्टमेंट रो भी डिसाइड करि परिबा. जदि आपण यू आर इन्वेस्टिंग मोर इन द लेबर फोर्स, डेफिनेटली सेटा लेबर इंटेंसिव भी हेई परिबो. बुझियो जिनसडा. एवं अधिका जोटी लेबर फोर्स थाए सेटा को आपण स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी कहंती, कारण स्मॉल स्केल एमएसएमई गुडी को दे आर नोन फॉर मोर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो सेही जिनस को मैं कहि परिबा. ऑप्शन एठी नाही 1 2 3 4 पई. तो सेति पई ये क्वेश्चन रो आंसर तो ऑब्वियसली होची आपनकर 1 to 4, बट 3 भी हमें कंप्लीटली डिनाय करि परिबा नाही. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन. Despite having large reserves of coal, why does India import millions of tons of coal? काहेकि आंसर करि परिबे. क्वेश्चन ऑलरेडी पचरा जाइछि, एनसीईआरटी लेवल रो क्वेश्चन एटा. आपण माने एनसीईआरटी पढिथिबे आपनका प्रिपरेशन पई. देखंतु, it is the policy of India to save its own coal reserve for future and import it from other countries for the present use. एटा केबे भी संभव कि प्रेजेंट रिजर्व को आपण या प्रेजेंट रिजर्व को कंजर्व करिवे एवं इंपोर्ट करिवे. ता फल रे कोन हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ड्रेन हो आपनकर. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपनकर कोन हो, ड्रेन हो. सो दिस पॉलिसी इज नॉट करेक्ट. सेकंड देखंतु, मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स इन इंडिया आर कोल बेस्ड एंड दे आर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट सप्लाईज ऑफ coal from within the country. Number one. Number two, steel companies need a large quantity of coking coal which has to be imported. बहुत समय रे आपण देखिबे समर रे जतबे हाई डिमांड था इलेक्ट्रिसिटी रो, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डिमांड, से हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डिमांड समय रे ब्लैकआउट होबार बहुत चांसेस था. बहुत गुडे ग्रीड फेलियर भी देखिबा को मिले. व्हाई?
एवं से समय न्यूज रे आसे कोयला शॉर्टेज रो कोल शॉर्टेज रो न्यूज रे भी आसे तेणु ये गोटे फैक्टर मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स आर coal based and they are not able to get sufficient supplies of coal within the country. That is one factor jyoti you have to import. Second, स्टील कंपनीज रे जो कोकिंग कोल जोटा यूज करा जाए से कोकिंग कोल जोटा कि हाई ग्रेड कोल से हाई ग्रेड कोल इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया abundantly. Not available in India abundantly. That is the reason we need to import those coking coal. Let's say for example from Australia. Australia रे हमें तक import करूँ तो ये भी गोटे correct statement. So answer is 2 and 3. B is the correct answer. Consider the following statements. Industrial development in India to an extent is constrained by industrial development in India to an extent is constrained by which of the following? Okay. First, lack of adequate entrepreneurship and leadership in business. Number 1. Lack of saving to invest. Lack of technology, skill and infrastructure. Limited purchasing power among the larger mass. ठीक अछि से क्वेश्चन पचारुची जे एमान को भितरु को फैक्टर्स गुडिको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया को पछरे रखुची आई मीन दैट मीन्स लिमिटेशंस द कांस्टेंट ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तळाडू देखि जिबा लिमिटेड परचेजिंग पावर अमंग द लार्जर मास का पाखरे लिमिटेड परचेजिंग पावर दैट मीन्स मार्केट इज वेरी नैरो or very small. In large sections of the society, they cannot afford certain goods and services because that is beyond their income capacity. Second, lack of technology, skill and infrastructure. Infrastructure is again, it's a challenge. Basic infrastructure facilities, India re nahi for the to start an industry, and lack of technology and skill, definitely another factors. Third, lack of saving to investment. कारण इन्वेस्टमेंट देखो सपोज जदि आपनकर टार्गेट अछि टू 2047 सुधा आपण चाहूचंती इंडिया को डेवलप कंट्री रे कन्वर्ट करबा पई यू नीड इन्वेस्टमेंट समथिंग अराउंड लेट्स से 30 to 35% ऑफ जीडीपी बट सेविंग केते अछि लेट्स से 20%. तो 20% सेविंग अछि यानी कि जो बैंक रे जो डिपॉजिट्स गुडी को अछि सेठी 20% अच्छी बट आपन इन्वेस्टमेंट केते आवश्यकता अछि 30 to 35%. तो ये 15% इन्वेस्टमेंट आसीबो कोटु त माने जदि सिंपल वे रे कहबा को गले जदि आपण डेवलप कंट्रीज अचीव करिबा पई आपण चाहउचंदी 35 टंका रो इन्वेस्टमेंट बट आपण पाखरे अछि केते 20 टंका रो तो 15 टंका कोठु आपण आनिबे बोरो यू नीड टू बोरो दैट. सो बोरोइंग रो आउरी गोटे प्रॉब्लम कोन यू हैव टू पे द इंटरेस्ट एज वेल एज द प्रिंसिपल अमाउंट तेणु ताकू भी आपन को अर्न करबा को पड़ी बुझियो जिनसटा तेणु सेविंग गोटे कंस्टेंट आपन को देखिबा को मिलियो. एंड द फर्स्ट वन इज द लैक ऑफ एडिक्वेट एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप इन बिजनेस. ये गोटे फैक्टर नुहे एंटरप्रेन्योरशिप हमर अछि हमर लीडरशिप भी अछि हम कंट्री रे बट ये कारण पई से माने पछरे रहउछन. तो आंसर इज व्हाट सी आपन कहि परिबे 2 3 and 4. आंसर होछि आपन को सी 2 3 and 4. Next देखिबा tourism industry in India is quite small compared to many other countries in terms of India's potential size. Which one of the following statements is correct in this regard? India ro size जदि आपण देखिबा potential size tourism is very small component काहे कि tourism प्रति हम सते फोकस करी ना हो. आंसर देखिबा correct in this regard. Distances in India are too far apart from luxury hotels are too expensive for Western tourists. For most of the months, India is too hot for Western tourists to feel comfortable. Most of the picturesque resorts in India, such as in Northeast and Kashmir, are for all practical purposes out of bounds. In India, the infrastructure required for attracting tourists is inadequate. So, the overall ये तीनोटी जाक पॉइंट को समराइज करिवे डी होची आपनकर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन कि एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नाही. हॉट वेदर इज नॉट अ रीजन.
hot weather is not a reason. ठीक है जी. तो मेन हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर. That's true. Cold climate रू से आसुचंदी, बट हॉट फैक्टर गोटे नुहे कि से टूरिस्ट आसबे ना. Obviously आप देखो जो पीक समर 2 मास रोचे, मैक्सिमम 3 मास, बाकी समय तो यू कैन ट्रैवल. नेक्स्ट, in India, which of the following is regulated by the Forward Market Commission? Forward Market Commission. Answer करंतु. Forward Market Commission. Forward कौन? Forward होची जो future trading ପାଇଁ जोटा use करा जाए. Forward होची आपनकर future trading ପାଇଁ जोटा use करा जाए. तबे future trading माने जो commodity future trading अछि सेटा ही कंट्रोल करा जाए कहा द्वारा? Forward Market Commission द्वारा. Okay. What are the recent policy initiative of the government of India to promote the growth of manufacturing sector? Manufacturing sector को promote करिवा पाई recent initiative कौन निया जाइछि? Manufacturing sector को promote करिवा पाई recent initiatives कौन निया जाइछि? First देखंतु, setting of national investment and manufacturing zone, जेमती SEZ आमर अछि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेही भली भाबरे नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन अछि. केवल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स गुडी को सेठी हमें सेटअप करबा. प्रोवाइडिंग द बेनिफिट्स ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंस होची ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रे गोटे सबुटो बडा कंपोनेंट. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फॉर एग्जांपल, to set up an industry you need, let's say, environmental clearance, you need electricity connection, you need, let's say, the bank credit, you need permission of regarding transportation. ये सब जिनसर आवश्यकता अछि. तो आपण गोटिए जगह रे गोटिए सिंगल विंडो क्लियरेंस आपन को मिल गला. तो you do not have to go multiple places to get the clearance, जोटा कि आगुरु होतला. term आमे concept आनी के ease of doing business. If someone wants to do business in your country, so easy facilities would be given. ठीक है जी. तो ये हो जी second statement is correct. First one, second one is correct. Third, establishing the technology acquisition and development fund. Technology acquisition and development fund in the sense easily अपन technology transfer, जमते अपन देखिए डिफेंस रे हमें बर्तन डिफेंस एक्सपोर्ट भी करूचे. आगुरु कौन करूथलु? कंप्लीटली इंपोर्ट ऊपर डिपेंडेंट थलु. तो लास्ट 10 इयर्स 15 इयर्स भीतर हमें कौन करिछु ना डिफेंस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट हमें स्टार्ट करिछु. को डेवलपमेंट डिफेंस टेक्नोलॉजी रे कोऑपरेशन फलरे को डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हेछि. फलरे बर्तन आमे भी कौन करछु से गुडी को डेवलप करि परछु. बुझी पार्छन जिनसटा आमे भी सेगुडा डेवलप करके आमे ताको एक्सपोर्ट करूछु. तो ऑब्वियसली थर्ड इज आल्सो करेक्ट. आंसर इज सी 1 to 1 3. नेक्स्ट, disguised unemployment generally means large number of people remain unemployed, alternative employment is not available, marginal productivity of labor is zero. Marginal productivity of labor is zero. So more and more people are appointed, or more and more people are appointed than the required people, right? जति की requirement अछि ताठो अधिका employment जति मिलुची, they are disguised unemployment because their net contribution to the total production is zero. With reference to balance of payment, which of the following constitute the current account? Current account रे कोको components गुडी को हमें रखू. देखिए सेटा फर्स्ट होची बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन असेट्स, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स. ये क्वेश्चन यूपीएससी रे भी क्वेश्चन ऑलरेडी पचरा जाइछि. देखो तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहिला में कोन बुझू? ट्रेड इन टर्म्स ऑफ गुड्स आपण कहि परिबे. दैट मींस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स. एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली, एटा को मन रखते गुड्स ओनली. जेमते हमें कहो ना
कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस. सो इन दिस ट्रेड पार्ट जोटी बैलेंस ऑफ ट्रेड विषय डिस्कस होची सेठी केवल गुड्स विषय आम डिस्कस करूछु, नो सर्विसेस. राइट, बैलेंस ऑफ ट्रेड माने योर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर बैलेंस्ड, आर इक्वल. सो obviously that is the part of the current account. Second is foreign assets. Foreign assets माने सेटा कहारो part? Capital account. Capital account. Balance of invisibles माने कौन? Trade in services. Balance of invisibles माने कौन? Trade in services. Services which is not visible, intangible in nature. Special drawing rights neither part of current account nor part of capital account. SDR होची कोन ना आपनकर गोटे पार्ट कहारो foreign exchange reserve. It's a part of the forex which is maintained by the central bank of any country or RBI by India. So SDR माने कोन? SDR होची simply a combination of foreign currencies, that is simply it is known as wallet बोले ताको कहू. And it consists of combination of foreign currencies. को foreign currencies गुडी को डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग एंड युआन और रेमनिंबी जोटा को हमें कहू चाइनीज करेंसी. ठीक अछि, ये होची एसडीआर. तो एसडीआर मेन काम कोन? एसडीआर मेन काम होची जेतेबेले फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रे फॉरेन करेंसीज गुडी को सरी जाए, गोल्ड भी सरी जाए, देन सब सेंट्रल बैंक गुडी को कौन करती? एसडीआर यूज करती. एसडीआर मीन्स एसडीआर रे थिबा जो फॉरेन करेंसीज गुडी को. ठीक अछि, नेक्स्ट यार आंसर कोन? यार आंसर होची 1 and 3, balance of trade and invisibles. Next, bank rate implies what? Bank rate implies the rate of interest paid by the Reserve Bank of India on the deposits of commercial banks. Second, charged by the banks and loans and advances, payable and bonds, at which Reserve Bank of India discounts the bill of exchange. Discounts the bills of exchange. Bank rate simple कहबाको गले the rate at which commercial banks takes loan from the RBI. First statement एटा को मन रखते फर्स्ट स्टेटमेंट होची कमर्शियल बैंक जो रेट रे लोन निये. एंड आपण कहबे भाई रेपो भी तो अच्छी नहीं, रेपो होची शॉर्ट टर्म पे. बैंक रेट सिंपली को समय यूज करा जाए. बैंक रेट जदि कमर्शियल बैंक ऊपर कोनोसी कारण पई पेनल्टी इंपोज करियार अछि एवं पेनल्टी सहित ताको पैसा देवार अछि तबे ता ऊपर बैंक रेट इंपोज करा जिवो. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पेनल्टी रेट एज वेल. एवं से पेनल्टी रेट माध्यम रे जो बिल ऑफ एक्सचेंज गुडी को नहीं के आसीथिबो कि कमर्शियल बैंक ता अगेंस्ट पैसा नवा पई एवं सेटा को सितमें तक कुहा जाए डिस्काउंट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज. कमर्शियल बैंक कैरीज दोस बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड against that bills of exchange RBI provides money. Number 1. Number 2 होची मुझे एमती कहली रेपो रिवर्स रेपो होची शॉर्ट टर्म नेचर पाई एवं जनरली लॉन्ग टर्म एवं पेनल रेट जोटा इंपोज करा जाए सेटा होची बैंक रेट. एठी होची डी. Consider the following: Industrial Finance Corporation of India, Industrial Credit and Investment ICICI, IDBI and Unit Trust of India. The correct sequence आपण कहबे. The correct sequence आपण कहबे. ठीक अछि, correct sequence आपण देखिबा. फर्स्ट से कोन अछि? IFCI अछि. इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एटा को केवे एस्टैब्लिश करा गला? इंडस्ट्रियल फाइनेंस ना, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एटा को केवे एस्टैब्लिश करा गला? इट्स नॉट 2023. नाइनटीन 48 23 कहीं लिख लूं 1948
ठीक अछि तापरे आईसीआईसीआई देखनियंतु केबे एस्टैब्लिश करागला 1994 then IDVI I think 1960s 1964 then UTI Unit Trust of India 1963 तो एठी आपण सीक्वेंस देखि परिबे 1 to 4 3 A is the correct answer next देखिबा as part of the liberalization program with a view to attract foreign exchange the government and the RBI have devised two schemes known as FCNRA, FCNRB. Which of the following is a true regarding these two schemes? FCNRA and FCNRB. First, under the scheme A, RBI bears exchange rate fluctuations. Under scheme B, the other banks are to meet out differences in exchange fluctuation. Both the schemes stand withdrawn now. Only scheme A has been withdrawn. FCNR विषय के कही परिबे देखो तो FCNR होची फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट यानी कि जो एनआरआईज माने अछंती नॉन रेसिडेंट माने अछंती से माने कोन करिवे मनी सेव करि परिवे दे कैन सेव मनी ठीक अछि कोठी ना फॉरेन करेंसी रे जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम अछि तारो बैंक अकाउंट रे से माने सेव करि परिवे ठीक अछि यूएस डॉलर हो पाउंड हो ए माने डिपोजिट्स रखी परिवे तो यार फायदा कोन होबो फायदा होची फर्स्ट तो इठी एक्सचेंज आपण सिंपली कहि परिवे कि एक्सचेंज रिस्क इठी किछ नाही कारण से माने रुपी रे कन्वर्ट करू नांदी से माने सिंपली फॉरेन करेंसी रे रखुचंदी ठीक अछि फायदा काहा को होबो ना जो कंट्री रे सेटा बैंक कारण ता पखरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी तारो अमाउंट भी बढ़िबो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रे इंक्रीज होबो तो सेत पई एफसीएनआरए बोली ताको कुआ जाय फॉरेन कंट्रीब्यूशन नॉन रेसिडेंट इंडियंस बोली को नॉन रेसिडेंट बोली कुआ जाउची फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट एफसीएनआर तो एटी क्वेश्चन अछि कि अंडर द स्कीम ए RBI bears exchange rate fluctuations. First statement अछि. Second से कहूची under scheme B, other banks are to meet out difference in exchange rate fluctuations. Both the scheme stand withdrawn now, and for only scheme A has been withdrawn. तो एठी जदि आपण देखिबे स्टेटमेंट गुडी को स्टेटमेंट रू फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट होची आपनकर कोन करेक्ट कारण जो एक्सचेंज अच्छी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन ए रे आरबीआई ताको बियर करूची एवं स्कीम बी रे ताको से जो बैंक्स गुडी को थेबा कमर्शियल बैंक रे जोठी डिपॉजिट से माने रखिथिबे सेही माने ही से फ्लक्चुएशन को बियर करिवे एवं ए जो अछि ए को विथड्रॉ एथि पई करा जाईची कारण एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस काफी अधिका देखिबा को मिलुथला ठीक अछि जेंति आपण देखिबे गोटे डॉलर बर्तन 84 को क्रॉस करि सरलानी सेहि पई टू प्रिवेंटिव मेजर हिसाब रे एटा को आरबीआई द्वारा विथड्रॉ करि निया जाईछि ठीक अछि
तो आंसर होची आपनकर कोन ना 1 2 एंड 4 आपण कहि परिबे डी होची आपनकर आंसर 1 2 4 आपण कहि परिबे नेक्स्ट देखिबा हवाला ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पेमेंट्स हवाला ट्रांजैक्शन कहले कोन बुझो हम हवाला होची इलीगल मनी जोटा जोटा ब्लैक मनी रो गोटे पार्ट कंपोनेंट जोटा received in rupees against overseas currencies and vice versa without going through the official channel तो official हेले माने सेटा white money ही जीवो legal money ही जीवो हवाला माने ही होची कोन ना illegal money black money ठीक अछि आंसर होची आपनकर ए नेक्स्ट देखिबा ट्रेजरी बिल्स commercial papers debentures certificate of deposits how many of the instruments given above are part of the money market देखो तो मनी मार्केट होची कोन ना simply regulated by the RBI number 1 number 2 short term money instrument आपण क्वेश्चन पचरी परंती कि शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट कहले कोन ना लेस देन 365 days लेस देन 365 days सेटा होची शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म माने मोर देन 365 days सेत पे आपण देखिबे ट्रेजरी बिल होची शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट गोटे थाय 91 days ट्रेजरी बिल आउट थाय 182 days ट्रेजरी बिल आउट थाय 364 ट्रेजरी बिल ये होची तार मैच्योरिटी पीरियड ये होची तार कोन मैच्योरिटी पीरियड टी बिल जोटा कहूचे एवं एगुडी को ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जहां थ्रू रे गवर्नमेंट लोन रेज करे फंड रेज करे लोन निये ठीक अछि कमर्शियल पेपर ये होची अगेन शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट डिवेंचर मु आपन को ऑलरेडी आपन को साथ डिस्कस करितली डिवेंचर होची कोन ना नॉन सिक्योर्ड बॉन्ड बॉन्ड माने कोन ना ये होची लॉन्ग टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट या लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट अप्रोप्रिएटली जति आपन कहबा को चाहे लॉन्ग टर्म तेनु एटो को आपन इजीली एलिमिनेट करि परिबे फोर्थ होची सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स ये होची अगेन शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म मनी इंस्ट्रूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स माने कोन ना जेतेबेले कमर्शियल बैंक्स आर शॉर्टेज ऑफ फंड्स दे कैन इश्यू दिस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स सो दैट पीपल कैन इन्वेस्ट आपण सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स ऊपर भी आपण इन्वेस्ट करि परिबे परचेज करि परिबे एवं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स अगेंस्ट रे आपण को गोटे मैच्योरिटी पीरियड थिबो विद इन द 365 days तो मन रखता सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कमर्शियल पेपर्स ट्रेजरी बिल्स ये तीनोटी जाक होची शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट डिवेंचर बॉन्ड होची लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ठीक अछि 1 2 3 सी इज द आंसर ओनली 3 नेक्स्ट with reference to possible reasons behind fall in Indian rupee means what fall in Indian rupee means depreciation fall in Indian rupee means literary sense रे नो कि तळे पड़ी जिवो depreciation the value has been decreased now from 83 to 84 to 84.11 what is this depreciating the value has been continuously declining of Indian rupee against dollar so how many of the statements given above are incorrect se coach incorrect अपन को find out करिवा को पड़ियो first देखंतु higher inflation in the domestic market higher inflation in the domestic market जदि domestic market रे inflation अच्छी तो से आपन को सपोर्ट करिबो ना नहीं
यानी कि रुपी डेप्रिसिएशन रे हेल्प करिवो या रुपी डेप्रिसिएशन से करिवो ना नहीं, ये होची फर्स्ट. सेकंड, यूएस सेंट्रल बैंक रेजेस इन इट्स इंटरेस्ट रेट. शार्प इंक्रीज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस. देखो यदि इन्फ्लेशन इन द डोमेस्टिक मार्केट हैला तबे आपनकर एक्सपोर्ट कमिबार बहुत चांसेस अछि. एक्सपोर्ट कमिबार बहुत चांसेस अछि. फॉरेनर्स आपनकर प्रोडक्ट्स को परचेस करिवे नाही, तमाने export will come down. Export will come down, definitely put pressure on the currency. Currency आपनकर depreciate definitely हबो. बुझियो जिनसटा एक्सपोर्ट अधिका हितले कोन हितंदा, फॉरेन करेंसी रो सप्लाई बढ़ितंदा आपनको इकोनॉमी रे, देन एक्सचेंज रेट यानी कि इंडियन रुपी अप्रिशिएट हितंदा. बट एठी होची उल्टा. नंबर 1. नंबर 2 देखो, यूएस सेंट्रल बैंक रेजेस इट्स इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट रेट जदि रेज करछि यूएस सेंट्रल बैंक, मोर इन्वेस्टमेंट विल गो टू द यूएस इकोनॉमी, कारण हायर रिटर्न दोछि. से एग्जांपल जदि मु आपन को देबी, सपोज यूएस इकोनॉमी दोछि लेट्स से 12% इंटरेस्ट, इंडियन इकोनॉमी दोछि 8% इंटरेस्ट. लोक अधिक कोठी इन्वेस्ट करिवे यूएस इकोनॉमी रे. शार्प इंक्रीज इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस. क्रूड ऑयल प्राइसेस आपनकर इंक्रीज होउछि. आपण क्रूड ऑयल प्राइस इंक्रीज हवा फल इंपोर्ट को कम करि परिबे नाही, बिकॉज योर इकोनॉमी नीड्स दिस पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल. दैट मीन्स यू हैव टू पे मोर देन द सेम बास्केट ऑफ दिस पेट्रोल एंड डीजल. दैट मीन्स यू नीड मोर डॉलर, अगेन फर्दर डेप्रिसिएशन. तो तीनोटी जाक स्टेटमेंट होची कोन करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस. All the threes are responsible for the decline in the value of Indian currency or depreciation. तेणु से जो incorrect पचरजी आंसर होची कोन D, none. Consider the following statement with reference to digital banking units. Digital banking units. First देखंतु, digital banking units are considered as branches of a bank. No physical cash is accepted for deposits at the DVUs, digital banking units. At present, only commercial banks are permitted to open digital banking units. Answer करूँ तो डिजिटल बैंकिंग माने कौन, जमती मु आपन गोटे कहितली नियो बैंक, सुनी थिबे आपन. नियो बैंक माने कौन, बैंक्स which will only be operated digitally on in the digital mode. They do not have physical existence. Neo bank. So digital banking units माने they do not have bank branches. They do not have brick and mortar bank branches. So you can easily eliminate this. Second, no physical cash is accepted for deposits or the DVUs. Correct. Physically cash nahi. Transfer money from one account to another. Third, at present, only commercial banks are permitted to open DVUs. Not only commercial banks, other let's say बाकी जो अच्छी finance companies want to fintech want to, they can also start this digital banking units. So answer is what? Answer is only one apna koi paribe. A is the correct answer. Second statement is the correct. Which committees are associated with estimation of poverty in India? Planning Commission working group gote heithila poverty estimation pai, and C रंगराजन भी थिला जोटा कि तेंदुलकर कमिटी को रिव्यू करथिला. तो आंसर होची आपनकर 1 and 3 C only. With reference to credit guarantee scheme for startup, consider the following statements. Credit guarantee scheme for startup, consider the following statements. It provides guarantee coverage to its member institutions and debt facility extended by them to all startup. Startup recognized by departments for promotion of industry and internal trade are eligible for guarantee coverage up to
10 crore for per borrower under the scheme. Non-banking finance companies are not eligible for registering as a member institution under the scheme. Credit guarantee scheme for startup. देखो तो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप जदि आपण देखिबे startups recognized by Department for Promotion and Industry Internal Trade are eligible for guarantee coverage up to 10 crore for borrower under the scheme. So second statement is correct. Only B is the correct. बाकी जो दुईटी जगह अछि they are incorrect. ठीक अछि बाकी जो दुईटी जगह अछि they are incorrect. Which of the following factors determine the minimum support prices in India? Minimum support prices कहा ऊपर डिपेंड करे? Minimum support prices announce करिवा पूर्वरु को factors गुड़ा को मैं consider करूँ. Ownership of land holding of marginal farmers, international price situation, intercrop price parity and pressure group. CACP जो अच्छी CACP अच्छी CACP कौन करे? MSP को रेकमेंड करे. आपण माने जानी थिबे MSP को रेकमेंड करे काहाको ना कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स तो अल्टीमेटली सी ही डिसाइड करन. तो जो रेकमेंडेशन हुए से रेकमेंडेशन ने को फैक्टर को कंसीडर करा जाए MSP कैलकुलेट करिवा पई. MSP कैलकुलेट करिवा पई फर्स्ट होची प्रोडक्शन कॉस्ट. सेकंड होची मार्केट ट्रेंड जो क्रॉप ऊपर डिसाइड करूछन तार मार्केट ट्रेंड. देन सप्लाई एंड डिमांड. देन इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी. Then terms of trade. Then margin over cost of production. Consumer impact, national requirement, यानी कि मार्केट डिमांड आपण कहि परिबे. क्रॉप साइकिल, क्लाइमेट चेंज ये सब फैक्टर्स गुडी को आमे कोन करू CACP कंसीडर करे बिफोर आपण कहि परिबे डिसाइडिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस. तेनु एठी जो पर्टिकुलर फैक्टर गुडी को अछि 1 और 4 को छाडला पर केवल दुईटी फैक्टर हमको देखिबा को मिलुची. बाकी तो मेंशन नहीं किंतु बाकी फैक्टर गुडी को मु एठी आपन को मेंशन करूथली. ठीक अछि आंसर होची सी. नेक्स्ट कामत कमिटी ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज़ रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. कामत कमिटी सिंपली मन रखतांदु लोन रीस्ट्रक्चरिंग. कामत कमिटी इज अबाउट लोन रीस्ट्रक्चरिंग. ठीक अछि नेक्स्ट देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इट वाज सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन. इट वाज सेट अप एज ए शेयर होल्डर्स बैंक बट वाज नेशनलाइज्ड इन 1949 यानी कि फर्स्ट हिल्टन यंग कमीशन आपण जानि थिबे ऑलरेडी हमें डिस्कस करी छ मल्टीपल टाइम्स. जेतबे स्टार्ट करा गला आरबीआई को इट वाज शेयर होल्डर्स बैंक और यू कैन से इट वाज ए प्राइवेट बैंक बट नेशनलाइज्ड केबे करा गला 1949 रे. नेशनलाइज्ड करा गला 1949 रे. सो आंसर बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. नेक्स्ट देखिबा which of the following statements are true regarding India's present exchange rate system.
प्रेजेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम प्रेजेंट एक्सचेंज रेट कौन अच्छी rupee dollar rate depends on the market forces of demand and supply correct data market forces RBI regulates the rupee dollar rate RBI intervenes in the foreign forex market RBI regulates the forex market यार आंसर कौन हबो कि आंसर करि परिबे देखंतु rupee dollar rate depends on the market forces इंडिया कौन करे इंडिया फॉलो करे आपणकर जोटा अच्छी गोटे अच्छी आम जानी जोटा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम आउ गोटे हूँ आप मैनेज्ड फ्लोटिंग ये मैनेज्ड फ्लोटिंग माने कौन या मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम माने कौन फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड रो गोटे कॉम्बिनेशन फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड रो गोटे कॉम्बिनेशन यानी कि आरबीआई दुईटी जाक जिनस को फॉलो करे डिटरमिन कहा द्वारा है मार्केट सिस्टम द्वारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम द्वारा बट जदि सेठी किछि प्रॉब्लम अराइज कला जेमति रिसेंटली आपण देखिबे 84 आमे क्रॉस करि सरलानो $1 इंडियन रुपीस रे 84 ऑलरेडी एक्सीड ही सरलानी ए जगह रे आमे कोन करिबा ए जगह रे चेष्टा करिबा ताकू मैनेज करिबा पई सो दैट it would not further depreciate it would not depreciate more than this so what we need to do हमें ताको इंटरवीन करिबा आरबीआई सेटा को इंटरवीन करे सेल करे या परचेज करे सेटा को हमें अलगा क्लास रे डिस्कस करिथिले तो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑब्वियसली करेक्ट ठीक अछि फर्स्ट स्टेटमेंट आपण देखिबे ऑब्वियसली करेक्ट सेकंड स्टेटमेंट जो कुछ रेगुलेट्स वी डू नॉट रेगुलेट रुपी डॉलर रेट को रेगुलेट करे नाही यानी कि एक्सचेंज रेट केते हबो सेटा हमें डिसाइड करूना या आरबीआई करे नाही आरबीआई इंटरवीन जरूर करे यानी कि डेफिनेटली इंटरवीन्स इन द फॉरेक्स मार्केट रेगुलेट्स द फॉरेक्स मार्केट रेगुलेट हमें करू केमती रेगुलेट करू यदि एक्सेसिव डेप्रिसिएशन होउची देन वी ट्राई टू इंप्रूव दैट वी ट्राई टू अप्रिशिएट को भली भाव रे किछि इनडायरेक्ट मेजर्स नहीं कि हमें डायरेक्टली चाइना टाइप रो फिक्स करू दो नहीं हमें एटा को 75 कलो फिक्स नो वी ट्राई टू लाइक आपण कोइ परिबे टेक सर्टेन मेजर्स सो दैट इंडियन रूपी कैन बी अप्रिशिएटेड ठीक अछि तो आंसर एठी हो आपनकर कोन सी केतबळे अलगा समय रे मुझे पूरा मेकानिज्म आपन को डिस्कस करू कारण टाइम कांस्टेंट एक्सचेंज रेट रो पूरा मेकानिज्म इट टेक्स समथिंग अराउंड 1 आवर जदी मु डिस्कस करबी पूरा तनु ताको केतबळे फर्दर पर डिस्कस कर देबी एठी मेंशन अछि आपनकर आरबीआई इंटरवेंस सेटा को हम मैनेज्ड फ्लोटिंग बोली कहू जोटा आरबीआई करे मैनेज्ड फ्लोटिंग ठीक अछि नेक्स्ट Which of the following situation may lead to depreciation of country's currency with respect to another currency? Which of the following situation देखो may lead to depreciation? First, foreign investment inflow. यदि अपन को कंट्री को अधिका foreign investment आसीबो, that means demand for foreign currency will increase. That means supply of foreign currency will increase. That means demand for domestic currency will increase. तो आपनकर डोमेस्टिक करेंसी कौन हबो डेप्रिशिएट जगह रे अप्रिशिएट करियो सेकंड राइज इन द इंटरेस्ट रेट जदि आपनकर डोमेस्टिक मार्केट रे इंटरेस्ट रेट राइज हला तो ऑब्वियसली मोर इन्वेस्टमेंट वुड कम टू योर इकोनॉमी दैट मींस डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी विल राइज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट हवा फल कौन हबो आपनको कंट्री को अधिका फॉरेन करेंसीज आसीबो So answer एटी कौन none of the above ठीक अच्छे The term nostro account was recently in the news is related to what? Nostro account क्या आंसर करी परिबे सुनी चंदी की nostro account विषय के सुनी चंदी की nostro account विषय के सुनी चंदी की First statement देखो it is an account that one bank holds in another bank. Second, it is used to facilitate international transactions. तबे आंसर जदि आपण देखिबे सी होची आपनकर आंसर both 1 and 2 but nostro account कोन exactly मु आपनको
explain karibi. It refers to an account that a bank holds in foreign currency in another bank. Manakaro India ro SBI bank US ro gote bank pakhare account kholichi in terms of foreign currency. Nostro account and Vostro account refer to the same thing from a different perspective. Gote Nostro account bhi achi, gote Vostro account bhi achi. For example, Bank X has an account with Bank Y in Bank Y's home currency. यानी कि Bank X, let's say SBI रो गोटे account अच्छी US रे को currency रे US currency रे. Bank X, that is a Nostro account, meaning our account on your books. ताको कहा जाए कौन? Nostro account. While Bank Y, it is a Vostro, meaning your account on our books. तेणु सेई जिनसटी यूएस पर्सपेक्टिव रु हेले कोन हबो भोस्ट्रो अकाउंट, एसबीआई पर्सपेक्टिव रु हेले कोन हबो नोस्ट्रो अकाउंट. सपोज ब्रिटेन रो गोटे बैंक रो अकाउंट अछि एसबीआई पाखरे, सो एसबीआई पई सेटा कोन अछि भोस्ट्रो अकाउंट. लंडन रो बैंक रो पई सेटा कोन हिजबो नोस्ट्रो अकाउंट. ठीक है, भोस्ट्रो मीनिंग on our books. These accounts are used to facilitate foreign exchange and international trade transactions. मन रखते बेटा को उठो ची नोस्ट्रो अकाउंट आउट होची वोस्ट्रो अकाउंट. ठीक अछि. एसबीआई रो बैंक ऑफ अमेरिका रिलेट्स जति रहिला नहीं स्टेट बैंक ऑफ माने बैंक ऑफ अमेरिका आपण कहि परन. स्टेट बैंक तो फिर इंडिया ही हेला. फॉरेन कंट्री रो गुटे बैंक सेटा नो कि इंडियन बैंक फॉरेन नो नॉट एसबीआई यूएस नो. स्वागत है मु सितमई सेटा को आउथरे बुझिया चेष्टा करंतु. एसबीआई बैंक ऑफ अमेरिका पाखरे गोटे अकाउंट खोलिछि. एसबीआई बैंक ऑफ अमेरिका पाखरे गोटे अकाउंट खोलिछि. से केस रे आपन को बुझिया पड़ियो. तेणु आपण पई सेटा हे गेला नोस्ट्रो, यूएस बैंक पई हे गेला वोस्ट्रो. Yes. Next, the term SWIFT, sometimes seen in news, is related to. It is used in space technology. It is used to securely transmit information and instruction by financial institutions. It is used for messaging in secret defense communication, and it is used for faster transmission of data. Answer कौन हो? SWIFT stands for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. It is a messaging network that financial institutions use to securely transmit information and instructions through a standardized system of code. ठीक है जी. It is an 8-digit or 11-digit code, and interchangeably they also call the bank identifier code. बुझियो जिनसेटा तुम एटा को मन रखथिबे. स्विफ्ट रिलेटेड टू बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस. Which of the following statements correctly describes the meaning of legal tender? Multiple times हम डिस्कस करिचे. लीगल टेंडर माने कौन? Simply the money which a creditor is under compulsion to accept in settlement of his claims. ठीक है जी. Compulsion to accept in settlement of his claims. Prime Minister on 8th November 2016 declared that existing rupees 500 and rupees 1000 notes will not be legal tender. This was done under the which of the following act? Answer kari paribe. Which of the following act? Simply RBI Act 1934. मन रखते बेटा. RBI Act 1934 under no more this 500 and 1000 are no more legal tender currency. Which of the following functions are part of the Reserve Bank of India as bankers to bank? As bankers to bank. First देखो, enabling banks to maintain their accounts with RBI for statutory liquidity, statutory reserve requirements. Let's say SLR accounts with RBI, sorry, CRR, statutory reserve requirements.
enabling settlement of interbank transfer of funds, clearing house हिसाब रे भी से काम करे. Third, RBI provides short-term loans advances to banks, जिमती repo, reverse repo माध्यम रे, acting as the lender of last resort. तमने lastly जे अपन को बैंक lastly अपन को जे पैसा दे परिवो at the time of crisis. ठीक अछि. तो बैंकर्स टू बैंक हिसाब रे आपण कहा को कंसीडर करिवे? बैंकर्स टू बैंक. बैंकर्स टू बैंक्स माने ऑल ऑफ द अबव. डी करेक्ट. नेक्स्ट देखियो. वेज एंड मीन्स या पर हमें डिस्कस करिचो वेज एंड मीन्स एडवांसेस. इट इज अवेलेबल फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. वेज एंड मीन्स कोन आरबीआई रु सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लोन नियंती हला. आरबीआई रु सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लोन नियंती. इट इज अवेलेबल फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. गवर्नमेंट नीड टू पे इंटरेस्ट ऑन वेज मीन्स एंड एडवांसेस. इट इज टू मीट द टेम्पररी मिसमैचेस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स. टेम्पररी मिसमैचेस जदि किछि पैसार आवश्यकता अछि गवर्नमेंट नहीं परिबो. एंड दिस इज शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म इन द सेंस की लेस देन जो कहते अपन को 365 डेज 6 मंथ्स. ठीक अच्छे. शॉर्ट टर्म पे गोटे वर्ष रु कम. तो यहाँ पर सरकार को इंटरेस्ट दबा को पड़े. यस सरकार को इंटरेस्ट दबा को पड़े. वेज एंड मीन्स एडवांसेस इंटरेस्ट. सो आंसर होची डी ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट. Which of the following statements are correct regarding regional rural bank? ग्रामीण बैंक आपण देखिथिबे. regional rural bank होची से ग्रामीण बैंक. They are regulated by RBI. They are supervised by NABARD. Answer होची correct 1 and 2. Regulated banking notes हिसाब रे, supervised money transactions. ठीक अछि. कारण NABARD मु आगुरु कहिची डायरेक्टली कस्टमर्स को लोन दिए नाही. ग्रामीण बैंक थ्रू रे ही से दिए. Consider the following statements regarding National Housing Bank. National Housing Bank देखिबा कोन. National Housing Bank regulates housing finance companies. National Housing Bank is regulated by the Government of India. National Housing Bank provides direct finance for individual housing loans. National Housing Bank provides refinance for individual housing loans. Answer कोन. नेशनल हाउसिंग बैंक अगेन डायरेक्टली से दिए नहीं. डायरेक्टली केवे भी हाउसिंग लोन दिए नहीं. सेडा पाई कमर्शियल बैंक्स अछि. ठीक अछि. रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अगेन नेशनल हाउसिंग बैंक होची कहारो पार्ट सेटा होची आरबीआई रो. रेगुलेटेड बाय द आरबीआई. रेगुलेट्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज. नो कंपनीज को रेगुलेट से करे नहीं. मन रखते हुए गोटी एठी आंसर करेक्ट से होची डी 4 ओनली. फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट देखिबा एंजल इन्वेस्टर. एंजल इन्वेस्टर ऊपर टैक्स हटै दिया जाइथिला ए जो लास्ट बजेट रे. एंजल इन्वेस्टर ऊपर क्वेश्चन आसी पारे. ठीक अछि. एंजल इन्वेस्टर जनरली इन्वेस्ट देयर ओन मनी. कोट नुवा स्टार्टअप हो एंटरप्रेन्योर को ऊपर से माने इन्वेस्ट करंती. ठीक है. They invest in small startups and entrepreneurs. They provide more favorable terms and conditions as compared to other lenders. Angel investors is regulated by the SEBI. Answer कौन होगा? ठीक है. So माने इन्वेस्ट करंती स्टार्टअप रे. Regulated by SEBI. से इन्वेस्टमेंट ऊपर टैक्स जो थिला से टैक्स को एबे हटी दिया जाई छी to encourage startup. Next. Consider the following statements in terms of appointment of RBI governor. As fixed by the central government while appointing not exceeding 5 years and eligible for reappointment. तो गोटे टर्म रे आपण देखिबे not exceeding 5 years and eligible for reappointment. शक्तिकांत दास को देखो कंटिन्यू गवर्नर ही के अछन. नेक्स्ट मनी मल्टीप्लायर.
Consider the following statements. It increases with increase in reserve requirements of banks. Reserve requirements of bank यानी कि बैंक रे जदि reserve requirements बढ़िला तो से कुछ money multiplier बढ़िबो. Second देखिबो. It decreases with increase in reserve requirements of banks. It increases with monetary base, decreases with monetary base. Answer कौन हो यार? Money multiplier. Money multiplier कौन कहूची? It increases with increase in reserve requirements of bank. Reserve requirement जदि बढ़े, reserve requirement तबे money multiplier से कुछ बढ़िबो. Second से कुछ decreases with increase in reserve requirement with bank. तो माने कौन? Suppose SLR जदि आपण increase करूचंदी, बैंक कम पैसा देई परिबो. कम पैसा देले कौन होबो? कम लोन क्रिएट होबो. तेनु मनी सप्लाई कौन होबो? कमिबो. दैट मीन्स मनी मल्टीप्लायर कौन होबो? कमिबो. बुझियो जिनसटा. तेनु ई जो फर्स्ट स्टेटमेंट अछि दैट इज इनकरेक्ट. सेकंड इज करेक्ट. मॉनिटरी बेस इंक्रीज हेले एटा बॉडी इट इंक्रीजेस विथ मॉनिटरी बेस, डिक्रीजेस विथ मॉनिटरी बेस. मॉनिटरी बेस सहित तार कोनोसी संपर्क नाही. तेनु बी होची आपनकर करेक्ट आंसर 2 ओनली. मनी मल्टीप्लायर होची कोन? मल्टीपल टाइम्स मनी जो ट्रांजैक्शन अपन को रोज मनी सप्लाई रे से क्रिएट हेल्प करे अपन को. नेक्स्ट consider the following statements regarding open market operations, buying and selling of government bonds by RBI. First statement कहूची changes in the monetary base, it changes the money supply, it changes the money multiplier. Monetary base कौन? Availability of money in the economy जोटा. Commercial bank पाखरे केते अछि प्लस पब्लिक पाखरे केते अछि monetary base. तो से हिसाब रे देखिबा गले जदी ओपन मार्केट ऑपरेशन में चेंजेस हुए तो मनी सप्लाई रे भी चेंजेस होबो, मॉनिटरी बेस रे भी चेंजेस होबो. तो आंसर होची आपनकर A 1 and 2. Consider the following statement regarding the CRR. It helps in securing monetary stability and managing liquidity in the economy. Second, there is no limit on CRR without any floor or ceiling rate. CRR ऊपर कौनसी लिमिट नहीं विदाउट एनी फ्लोर एंड सीलिंग रेट एंड से कहूची सिक्योरिंग मनी स्टेबिलिटी. तो ऑब्वियसली CRR कौन करे? मनी सप्लाई को कंट्रोल करे. तो आंसर कौन होबो आपनकर C बोथ 1 and 2. नेक्स्ट देखिबा. In the context of Indian economy, which of the following is our purpose or purposes? Statutory reserve requirements. Statutory reserve requirements. Statutory reserve requirements कहले हम कौन बुझू? फर्स्ट देखंतु माने CRR and SLR को ही statutory reserve requirements बोली कहा जाए. मन रखते हुए to enable the central bank to control the amount of advances the banks can create, to make the people's deposits with the banks safe and liquid, to prevent the commercial banks from making excessive profits, to force the banks to have sufficient vault cash to meet their day-to-day requirements. Answer कौन होगा? CRR and SLR. CRR and SLR का main purpose कौन? First thing कि अमाउंट ऑफ मनी को कंट्रोल करेगा, मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा. सेकेंड, जदि बैंक डिफॉल्ट हो जाए तबे लोक मानक डिपोजिट्स गुड़िको सही CRR and SLR रो जेमती दिया जाई पारिबो. तेणु सित CRR and SLR को रखा जाए. सो आंसर होची आपनकर B 1 and 2 ओनली. लेट्स क्रैक सिविल सर्विस OPSC व्हाई को क्वेश्चन ने पचारुचंदी व्हाई टिके क्लियर करंदु सो दैट आई कैन एक्सप्लेन. नेक्स्ट, the scheduled commercial banks are required to maintain CRR with RBI as per the which act? RBI Act 1934 CRR. A is the answer. As per the new monetary policy framework, who will determine the inflation target?
Who will determine the inflation target? Inflation target के decide करे? Monetary Policy Committee अच्छी ସେଥିରେ କିଏ ପାର୍ଟ ଅଛନ୍ତି आरबीआई रे भी ଅଛନ୍ତି representative government of India रे भी ଅଛନ୍ତି तो this is the perfect answer government of India in consultation with RBI. Next, which of the following statements are true regarding marginal standing facility? Scheduled commercial banks borrow additional amount for overnight only. The banks can dip into their SLR portfolio to borrow from RBI. It provides safety valve against unanticipated liquidity shock. टिके एटा को बुझिया ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା करिवे marginal standing facility repo rate रे कोन हुए commercial banks borrow करि पारे काहाटू RBI टू कोन यूज करिके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यूज करिके बट सपोज रेपो पाई नॉर्मल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं का पाखरे बैंक पाखरे बट एसएलआर अंडर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अछि बैंक रो लिक्विडिटी शॉर्टेज अछि ताकू नेसेसरी फंड रो रिक्वायरमेंट अछि सो व्हाट आरबीआई कैन डू आरबीआई कैन बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक बाय यूजिंग द एसएलआर कोटा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बुझियो आंसर एक्सप्लेनेशन टी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टी एसएलआर कोटा रे अछि दैट कैन बी यूज्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी जेतबे नॉर्मल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ता पाखरे नाही तनु सेटा को हमें मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज को एवं हायर इंटरेस्ट रेट से चार्ज करा जाए बैंक टू तो कमर्शियल बैंक्स बोरो एडिशनल अमाउंट फॉर ओवरनाइट ओनली वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड ओवरनाइट से इतना को आ जाए सेकंड कैन डिप इनटू एसएलआर पोर्टफोलियो यानी कि एसएलआर रे थिबा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यूज करि परिबो नॉर्मल टाइम रे नुहे एक्सेप्शनल केस एंड सेफ्टी वाल्व अगेंस्ट द अनएंटिसिपेटेड liquidity shock. So answer is D, all of the above. Next देखिबा which of the following RBI may do to curb the rupee depreciation? Rupee depreciation को curb करिबा में RBI कौन करि पारे? First देखंदु allowing importers to directly buy foreign currency from RBI. Foreign currency from RBI. Second, increasing the repo rate. Third, selling dollars in the foreign exchange market. Buying dollars in the foreign exchange market. देखो फर्स्ट से कौन कहूची जो इंपोर्टर माने अछंती से माने डायरेक्टली आरबीआई टू फॉरेन करेंसीज परचेज करिवे तो से टाइम रे हमें कौन करिबा रूपी डेप्रिसिएशन को कंट्रोल करी हबो ठीक अछि काहेकि ना इंपोर्टर माने बैंक को न जाएगी या कोई डीलर पाख को न जाएगी से माने डायरेक्टली आरबीआई ठू परचेस करिवे आरबीआई ठू परचेस कले आरबीआई पाखरे जो रिजर्व डॉलर अछि सेटा को सप्लाई से करिवो एटा जो फर्स्ट सेकंड से कहूची इंक्रीजिंग द रेपो रेट फल रे कोन हबो इंटरेस्ट रेट बढ़िबो सो दैट मोर इन्वेस्टमेंट वुड कम इनटू द इकोनॉमी इनफैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर माने भी अधिका आसीबे इंडिया रे इन्वेस्ट करिबा पई डॉलर रो इनफ्लो हबो selling dollars in the foreign exchange market depreciate केतेबेले हुए जेतेबेले demand for dollar is higher than the supply of dollar demand for dollar is higher तो से टाइम रे जो existing dollar अछि आरबीआई पाखरे आरबीआई कैन सेल दैट तो ये तीनोटी जाको स्टेटमेंट होची आपनकर करेक्ट तो आंसर होची आपनकर सी long term repo operation देखो long term repo operation conducted by RBI as per the 6th February 2022 monetary policy review meeting कौन फर्स्ट देखो it was a fixed term repo operation it was done at the above the repo rate RBI did not conduct auction to select the bank for this operation answer यार कौन हो it was fixed term repo operation जोटा कि long term बोलिया में को short term जोटा within less than the 1 year जोटा अच्छी रेपो जोटा हमें अच्छी 14 days या very short term रे जो रेपो operations हुए इटा होची long term more than 1 year long term रेपो operation काहे की introduce करा गला ना long term loan गुडी को सस्ता रखा जीवो short term loan को महंगा रखा जीवो
लॉन्ग टर्म रेपो अधिका लॉन्ग टर्म को सस्ता इथिमे रखा जीवो कारण जो लार्ज इन्वेस्टमेंट गुड़िक अच्छी से लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन थ्रू रे ही बोरो करते शॉर्ट टर्म माने कौन करते सेटा को इन्फ्लेशन कंट्रोल रे हमको इजी हबो तेणु इन्फ्लेशन कंट्रोल ना रे एमती इकोनॉमी को डाउन जमती न करिवा इन्वेस्टमेंट ग्रोथ को जमती कम न करिवा सेति पय लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन को इंट्रोड्यूस करा जायतिला ठीक अछि आंसर होची आपनकर one only. Next, MCLR, marginal cost of funds based lending rate. Which of the following statements are true? MCLR आपण जानी थिबे जो cost रे SBI सॉरी जो आपण कमर्शियल बैंक गुडी को अछंती से माने लोन दियंती कहा को कस्टमर को banks will do lending at or above MCLR. MCLR may increase because of increase in CRR or SLR कारण cost of borrowing बढ़ुची माने MCLR भी बढ़िबो MCLR helps in better transmission of policy rate into lending rate monetary transmission आपण जानी थिबे कि आपण देखिथिए बहुत समय रे जतबेले RBI कोन करे रेपो डिक्रीज करे कमर्शियल बैंक माने लोन रो रेट को कम करंते नाही यदि RBI रेपो इंक्रीज करिवो डेफिनेटली से माने इंक्रीज करि दियंती बुझियो जिनसडा तेणु मॉनिटरी ट्रांसमिशन सहीटा को ही कहा जाए द एक्शन ऑफ आरबीआई शुड बी रिफ्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स एक्शन विथ रेस्पेक्ट टू द कंज्यूमर जोटा कि स्मूथ हुए नाही हम कंट्री रे तो एमसीएलआर कोन एमसीएलआर होची लेंडिंग रेट फॉर द कंज्यूमर कस्टमर्स आपण जत लोन नवा को जाउचंती ओटे बैंक को तबे से लोन रो रेट केमते डिसाइड होची एमसीएलआर माध्यम रे ठीक अछि MCLR may increase because CRR SLR जदि बढ़िला cost of borrowing से माने definitely बढ़ेबे because they have to reserve more money under CRR and SLR. MCLR helps in better transmission of policy rate into lending rate से कहूची कारण MCLR जो आपनकर अछि सेटा होची आपण कोइ परिबे इजी ट्रांसमिशन आपन को हेल्प करे से पे आंसर होची आपनकर डी ऑल ऑफ द अबव नेक्स्ट देखिबा इन्फ्लेशन रो इंपैक्ट विषय देछि इन्फ्लेशन बेनिफिट्स क्रेडिटर्स इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डेटर्स इन्फ्लेशन बेनिफिट्स बॉन्ड होल्डर्स इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डिपोजिटर्स इन्फ्लेशन जतबेले हुए बेनिफिट काहा को दिए जे लोन नहीं थाए सबले मन रखते बेटा जे लोन नहीं थाए सी सबले बेनिफिट रे रुहे डेटर्स ठीक अछि जे लोन नहीं थाए कहीं ना इन्फ्लेशन फल इंटरेस्ट रेट बढ़िवा कथा बट बढ़े नाही पुराना इंटरेस्ट रेट रे ही आपण को लोन रिपेमेंट जो करंती सेति में डेटर ही बेनिफिट रे था तो ये थिला आपण टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तो आज पे यति की पूर्ण देखाबो नेक्स्ट क्लास रे लाइक करिवे शेयर करिवे कमेंट करिवे सब्सक्राइब मध्ये करिवे देखो किछि नुवा नुवा कांसेप्ट म आज इंट्रोड्यूस कली आपन सामने रे मु चेष्टा करिवे आपरे फर्दर क्वेश्चन आनिबे और स्लाइटली ताको एलाबोरेट आहुरी करिवे मु चाहिबी कि ताको डिस्कस करिवा पई बट समय कंस्ट्रेंट को नै कि हमें काफी एलाबोरेटली डिस्कस होनी गोटे गोटे क्लास रे चेष्टा करिवे तापरे फर्दर क्वेश्चन आनी कि सेही टॉपिक गुडो को आउटिके एलाबोरेटली डिस्कस करिवे सो दैट से कांसेप्ट्स गुडी को भी आपनकर क्लियर हेइ जे ठीक अछि तो आज पे एति की पूर्ण देखा हबो नेक्स्ट क्लास रे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जणैबे को कोन सी कांसेप्ट ते डाउट हैला कमेंट रे लिखिले मु नेक्स्ट क्लास रे ताको क्लियर करिया पय चेष्टा करिवे या जो क्वेश्चन रे भी डाउट अछि से क्वेश्चन को मु पूर्ण थरे भी डिस्कस करि परिबे ठीक अछि थैंक यू काली क्लास अच्छी काली क्लास हबनी काली होची थर्सडे नहीं फ्राइडे नेक्स्ट क्लास फ्राइडे 11 AM करंट अफेयर्स फ्राइडे 11 AM करंट अफेयर्स नेक्स्ट क्लास